Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ जयंत दास। जयंत दास, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। शुक्रिया विशाल। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा। Thank you, Vishal. Domestic stocks climb more than 1% amid positive global cues. Sensex rises above the 57,000 mark. Nifty settles above 17,100 level. Rupee appreciates 30 paisa against the US dollar and Brent crude prices hover around $108.50 per barrel. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज 1% से अधिक का उछाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 57,000 के निशान से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी भी 17,100 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ 30 पैसे मजबूत और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $108.50 प्रति बैरल के आसपास रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले शेयर बाजार की बात करते हैं। प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज 1% से अधिक का उछाल आया। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में तेजी दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 57,000 के निशान से ऊपर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,100 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.02% की वृद्धि से 574 अंक बढ़कर 57,038 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.05% की वृद्धि से 178 अंक बढ़कर 17,137 पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.45% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.36% की बढ़त दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today surged more than 1%. Domestic stock indices rose amid positive cues from global share markets. The Sensex at Bombay Stock Exchange closed above the 57,000 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled above the 17,100 level. The Sensex climbed 574 points or 1.02% to finish at 57,038. The Nifty also surged 178 points or 1.05% to settle at 17,137. In the broader market at the BSE, the mid-cap rose 0.45% while the small-cap index ended 0.36% up. In the Sensex pack, 20 companies locked gain while 10 declined. Ultratech Cement was the top gainer as it added 3.5%, followed by Asian Paint, which gained 3.2%. Maruti climbed 3.1% and Reliance rose 3%. On the other hand, Bajaj Finance lost the most as it slipped 3.4%, while ICICI Bank declined 1.4%. Bajaj Finserv fell 1.2%. Tata Steel was down 0.9%. In sectoral indices at BSE, 13 indices climbed while 6 locked losses. Auto and energy indices both surged 2.2%. Oil and gas rose 1.8% and tech ended 1.4% up. On the other side, metal plunged 0.4% while utilities and BankX both declined 0.2% each. Capital goods slipped 0.1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,659 companies gained, while 1,741 fell. Shares of 110 companies remained unchanged. Jayanto, after 5 straight sessions in which the Sensex and the indices lost almost, nearly 5% and nearly 3,000 points. Today we see positive news coming from the stock market. What are the reasons, apart from the positive global cues, which have contributed to this? Well, overall, while the Nifty broad base, I think, is still a bit weak in terms of, if you look at the broad base of stock markets, stocks. Yes, it's actually closing of a 5 days
losing streak with 574 points jump. Two basic points which I believe is, one is some optimism related to the earnings sector, which is going to come in soon in terms of how markets are not performing. And secondly, obviously, as I said earlier also, there will be such intra-week, and in this case specifically, although it's a spillover from last week, there will be some intra-week falls and rises both happening at the same tandem. So I don't see a risk of deepening of the markets or worsening of the markets from these levels, nor do I see a huge growth of the market momentum from this level onwards. If we talk about the last 5 sessions, there were continuous lows, and like we said, a lot of reasons for that, from geopolitical reasons to the high inflationary, inflation, global inflation, high crude oil prices. But what were the domestic? Because given the fact that, as we have been discussing in this program as well, the volatility will continue. What are the domestic reasons you think that are likely to contribute? Well, typically, I guess in terms of contribution for the next 4 to 5 weeks, the hardcore domestic reasons, although they might not be an over-impatient reason, but I do believe how the monsoon pans up, the initial reports of monsoon, coming in at a normal pace this time is also there. So that's one good news which is there in the distant horizon. That's the first part. Secondly, I do believe the changing scenario domestically in terms of COVID numbers. While we saw some sort of a lockdown in Jan, in various forms, not in a very restrictive form, but in various different other forms and all, didn't impinge on the economy to a great extent. But the fact that specifically China is reeling quite heavily because of COVID, and China's financial capital, Shanghai, which has been under lockdown for almost 2 to 3 weeks or so. I think that's going to also, maybe in the next 2 to 3 weeks, can bring in some dark clouds in how the sense expands from here. As of now, the immediate concern factor is of 4 or 5 states, which, including Delhi. So I think that could be the other reason which might lead us to a bad summer of how the stocks pan up or not. So those are the two reasons basically away from hardcore, stock markets. The other third domestic reason which I can foresee over here is how the traditional sectors, specifically high growth sectors like banking, like technology, or how they perform, both in their financial parameters. We saw how the news HDFC and HDFC Bank merger, panned on with, softening of the prices, although they turn around today and both of them exactly clocked after yesterday's fall. Both of them clocked in some positive gains. But then, as I said, at the end of the day, there will be some sectoral specific movement. And I do believe that at least these sectoral specific movements would be driven by at least how technology, new age companies and all behave, because typically the first quarter, April, May, June, are the dull quarter, of the whole season, and there is not much of activity apart from how the corporate results come in, and in terms of how policy news and all come in. I don't expect huge policy shifts at least in the next 3 months. What will be of certainly big concern over here is, of course, inflation, and that too domestic inflation, which is at 6.9% levels. Although the finance minister herself made a comment stating that it's the normal acceptable level of inflation is 4% plus 2%, so we have reached that 6% mark. But if you look at it in the background of how crude prices have played havoc globally, and how India has managed to, to some extent, bring in some sort of a, if not control, at least some sort of a assuage in terms of reducing the direct impact, negative impact of crude prices. Domestic prices of oil and petrol, of petrol and diesel and all have increased, but not to the extent what we saw in most of the other nations. So it could have been a much more bitter blow. If I put it in one single sentence. So I guess that's the other factor, coming back to your initial question, what could be the other domestic factors that could drive the market from here on? Yes, inflation, obviously. And although the MPC didn't, change its rates on all of this point of time, but it has given an indication going forward it will be inflation, reigning in inflation rather than, growth. So that's there, and it's also from the backdrop of what has happened in the Fed markets.
You mentioned sectoral movement, and you also mentioned inflation. Now, while inflationary pressures are affecting the balance sheets of a lot of companies, are there any specific sectors which may not bear the brunt, so to speak, so much of this inflation going forward for investors, which may be relatively, secluded from these? I don't think off the hand we can take an inflation inelastic, sector, if that's what you're asking, where the sector is completely or to a great extent insulated from what the inflation risks are. The good thing is, companies in the services sector, which are one of the main drivers of the Indian economy, they have their order books quite full. And to a great extent, it's quite a buoyant order book. And specifically, if we are speaking of the technology sector, they had a fantabulous performances over the last 2.5 years in COVID times. What we need to see is how expensive they are at this point of time. What we need to see is whether they can sustain, these costs, which I don't think they can. So those are a little bit of concern in terms of, but I don't think, coming back to your original question, I don't think we have any sector which can be called, inflation inelastic sector. So there would be responses in various degrees. Of course, sectors like manufacturing and all those traditional products they would take a big hit. But what about sectors like metal and energy? Yeah, that's what I said. So those sectors would obviously take a big hit. So there is no doubt on that. But having said so, the other part is cement, for example. I was just listening to a group of, advisors and experts on the cement industry, and they all believe, and I also agree with them to a great extent, when they say that cement still remains a very lucrative sector to invest in at this point of time, specifically given the fact that there is a scope of a real estate price rise over the next 1 year around 10 to 12%, which most of the reports are speaking of. So there would be obviously, some silver lining here and there. Not that we are in a situation of a dark cloud, but of course the concerns and the checklist of concerns are quite a lot at this point of time. One good thing, it's not a good thing, it's bad wording though, but one thing which has happened is the markets have heavily discounted what is happening in Russia and Ukraine. So I think after the initial impact, markets have settled down to the fight there, although people are dying in hundreds, and the war doesn't seem to end at all. So obviously it's bad news for Russia also, because they thought it will be almost a walkover of 2 to 3 weeks to take over whole of Ukraine. But that's not happened. So there always remains a threat of it boiling down to a much more bigger thing, because Ukraine can't stand and fight Russia alone. So there must be some support. And specifically after the drowning of the flagship. Yes, Moscow. There are concerns, and Russians are obviously, if not in those many words, are at least suggesting that, even the Russian state media agency has said that it's now start of a third world war, because they believe that it's just not Ukraine alone which is now in this fight. There are others also who are, part of this process. But in a much more hidden manner, not in the forefront. So this is a cause of concern, and that's why the war is going on in a quite a prolonged manner, which no one expected. You just mentioned the fact that the markets have already factored in the Russia-Ukraine war. Yeah. The other factor issue which the markets seem to have or should have factored in was the US Fed raising the interest rates, which was expected. So what is it now? We know that the US Fed had been speaking about raising the interest rates, and it has already taken the first step towards it. Exactly. So, but why is it spooking the markets now, when the markets know that this is going to happen throughout the year? Well, there are two things which I guess, if you're speaking of international markets over here, which I guess is why the markets at this point of time are getting spooked on and off. It's not that they're getting spooked every day, but that fear of something might happen, worse can happen, and that's why that selling off all of a sudden keeps on triggering. I believe the first thing is, of course, the fact that the rate increase will be much more hawkish in the months to come than just a 0.25%. So it might, while it might be 0.25% or 25 basis points, but the frequency can be a bit more. Yes. So that could be one reason. And the other reason, which I believe, is once again inflation, because there is a runaway inflationary spiral happening in the US markets, and I think that's seriously a cause of concern at this point of time. इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन और कोविड के मामले फिर से बढ़ना, चाहे पूरी दुनिया में, तो ऐसे में जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें
निवेशकों के सामने क्या रास्ते बचते हैं निवेश की दृष्टि से? बिल्कुल, ये देखिए विशाल, मैं मानता हूं कि निवेश का दृष्टि से इस वक्त मार्केट का जो स्तर है 57,000 से लेकर 60,000 लेवल का अंक तक जो स्तर है, कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्टैग्नेंसी इस लेवल में आके पहुंचा हुआ है। अब हमें यह समझना है कि यहां से मार्केट कितना एक्स्ट्रा वोलेटाइल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अच्छे स्टॉक्स, हमेशा जैसे हम कहते हैं कि सेक्टर निवेश करके अच्छे स्टॉक्स को आप चुनें और उसमें बेशक आप निवेश करके अपना जो भी 2 साल 3 साल का अवधि या 1 साल का अवधि जो भी है उस हिसाब से आप अपना निवेश करके रहिए। और हमेशा जो मार्केट का एक मेन मंत्र है, हम लोग का प्रोग्राम का भी मार्केट मंत्र नाम है, मंत्र ये बताते हैं कि गिरते हुए मार्केट या चढ़ते हुए मार्केट में हमेशा आपका अपॉर्चुनिटीज खरीदने बेचने का होता रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि गिरते हुए मार्केट में अगर आप बेच पाते या चढ़ते हुए मार्केट में आप खरीद पाते तो आज सारे जो भी निवेशक होते तो अमीर होते, मतलब एवरीवन वुड हैव बीन डन द राइट थिंग। तो वो होते नहीं है। मार्केट का यही सबसे मजा ये है कि इरेशनल एक्सुबरेंस जिसको हम कहते हैं कि इस तरह का उछाल चढ़ाव का बीच में आपका कहीं ना कहीं आपको अपना निवेश को सिक्योर्ड रखना है और सिक्योर्ड के साथ साथ जो आप एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो मार्केट से रिटर्न आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। तो ऐसा स्थिति में हमेशा इस वक्त भी मैं मानता हूं कि थोड़ी देर पहले मैं बैंकिंग क्षेत्र के बारे में बात कहा, हालांकि बैंकिंग क्षेत्र काफी लंबा और काफी तगड़ा चुनौती फिनटेक कंपनी से मिल रहा है, छोटी और मिड साइज। ये एक बहुत ही बड़ा एक गेम चेंजर शायद आने वाला 2-3 साल में होने वाला है, जहां पे आज का तारीख में उदाहरण समझ में कहूंगा, फिनटेक कंपनीज लोन आजकल आपको 32 सेकंड में आपका क्रेडिट एनालिसिस करके आपको 32 सेकंड में वो लोन आपको अप्रूव कर सकता है, 2 से लेकर 4 लाख तक। तो ये नहीं कि वो लोग रिस्क लेके अप्रूव कर रहे हैं। बैंक का जितना रिस्क अप्रूवल्स का प्रोसेसेस होता है, फिनटेक कंपनीज भी उतना ही करता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इस हद तक यूज करते हैं जहां पे आप जाके आपका 1 या 1.5 मिनट के अंदर फिनटेक कंपनीज निर्णय लेते हैं, आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक लोन आप ले सकते हो और उसमें आपका जिसको एनपीएस होता है बहुत कम होता है, क्योंकि वैल्यूएशन एंड लोन का जो क्वालिटी इतना अच्छा होता है। तो ये सारे नया चीजें जो आ रहा है देश में पिछले 5-7 साल का दौरान टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हो पाया इस तरह का चीजें, तो ये बैंक को भी चुनौती देंगे कल का दिन। तो इट्स अ न्यू थिंग विच इज डेवलपिंग और मैं मानता हूं कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इस तरह का चीजें होना बहुत जरूरी है और लोगों को डीपनिंग ऑफ द मार्केट का समझ आएंगे और बैंक्स कहे या फाइनेंशियल सेक्टर का जो भी एनबीएफसीज कहे या फिनटेक कंपनीज कहे, ये नया प्रोडक्ट्स ले आके मार्केट को और विस्तार करेंगे। मार्केट में लोन लेने वाला ज्यादा हो तो वृद्धि भी होएगा मार्केट में, फाइनेंशियल सेक्टर में। ये नहीं कि लोन लेना बहुत अच्छी बात लोग बोलते हैं, नहीं है, लेकिन कोई अगर लोन नहीं लेंगे तो बैंक में हम कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। हम अगर डिपॉजिट देते हैं और आगे बैंक लोन देता है, इसलिए हम लोग को वहां से कुछ ना कुछ वापस मिलते हैं। तो ऐसा स्थिति में मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र जो आप अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर काफी कंपनीज है जो हम लोग कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते रहते हैं, बिकॉज दे आर नेवर द सेक्सी स्टॉक्स इन द मार्केट, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग हमेशा टेक के बारे में बात करते हैं, हम लोग हमेशा बैंक्स, फिर हम लोग बड़े कंपनीज, ऑटो सेक्टर, इस तरह में बात करते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे ट्रेडिशनली इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, हम उसको मिस कर जाते हैं। तो मैं मानता हूं वहां पे भी जाए, थोड़ा सा आप अपना खबर रखें, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करके कुछ कंपनीज जो है वो कंपनीज के ऊपर अच्छे से चर्चा करके, समझ के, रिसर्च करके आप उसमें भी प्रवेश करें। ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये नहीं कि आप सेफ बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट से मूव आउट कर जाए, वो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, लेकिन नॉर्मल बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आपका अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस, अगर आपको लगता है 57,000 का सेंसेक्स में लिमिटेड है वो, तो आप देखिए बेशक काफी सारी चीजों में पी मल्टीपल जहां पे अट्रैक्टिव हो उस तरह के क्षेत्र में प्रवेश करके अलग से आप कमा भी सकते हैं इस बाजार में। जी, और अब बात करते हैं घरेलू मुद्रा के प्रदर्शन की। आज अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 30 पैसे मजबूत हुआ और $1 की तुलना में रुपया 76 रुपए 21 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। Very quick question here, Jayanto. Today, of course, like the stock market, we see that the rupee has appreciated against the dollar. But again, in the last few days, the rupee has been depreciating. In fact, in March, from being one of the best performing currencies in Asia, we see now it's going in the opposite direction. Do you see this continued volatility? Well, I do expect, yes. I do expect some volatility to remain in this market. But at the same time, I must tell you, the band will be, in the range of 76 to 78. Even in these markets. So that's, I think, which the rupee moral is settling down in terms of a volatile market.
रुक करते हैं वैश्विक बाजारों का। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.9% और जापान का निकेई 1.1% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग सपाट बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग 0.4% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.4% की गिरावट में रहे। अंतर्देशीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजारों में बढ़त का रुख था। लंदन का FTSE 100 0.2%, फ्रांस का कैक 1.4% और जर्मनी का डैक्स 1.2% की बढ़त में कारोबार कर रहे थे। Moving on to the US market, US stocks surged yesterday on the back of stronger than expected corporate earnings, but bleak forecasts on global economic growth pushed up bond yields and drove down oil. The tech-heavy Nasdaq led the way for gains in US markets as many corporations began to report stronger than expected earnings. Those reports helped investors shake off warnings from global forecasters of a slowdown in economic growth, which weighed on other sectors like bonds and oil. The Dow Jones Industrial Average Index gained 1.5%, the S&P 500 climbed 1.6%, and the Nasdaq Composite surged 2.2%. And we will continue with the program Market Mantra and continue our discussions with our guest Jayanto Das, but after this break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी रहेगी। पिछले वर्ष 6.1% की तुलना में इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.6% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले ये वृद्धि दर 4.4% रहने की संभावना थी। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के अर्थव्यवस्था के व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ने की आशंका है। ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में महंगाई और व्यापार में बाधा जैसे नकारात्मक रुझानों से ये असर अब दिखाई देने लगा है। रूस की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.5% घटने की आशंका है। यूक्रेन की वृद्धि दर 35% घटने का अनुमान है। इस संघर्ष के कारण अमेरिका, चीन और यूरोप की वृद्धि दर भी धीमी पड़ने की संभावना है। जनता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी रहने वाली है। इस पूरी अगर हम देखें तो ये जो अर्थव्यवस्था की जो गति जो है, वृद्धि दर धीमी रहने की जो बात की जा रही है, इसका असर भारत के संदर्भ में हम किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि ग्लोबल ग्रोथ रेट में अगर गिरावट आते हैं, एक तो कोविड का वैसे ही ऑलरेडी एक डाउन साइजिंग था इकोनॉमी का, और वैसे स्थिति में खास करके ये रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के पहले नवंबर दिसंबर में उन लोगों को जो सबसे बड़ा खतरा था वो है कि कच्चे तेल का कीमत एक अलग से शायद ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ रेट को डाउन कर सकता है। लेकिन उसके अलावा भी यूक्रेन और रशिया कोई फैक्टर नहीं किए थे। अब सिंस ये फैक्टर होकर रखा है तो 4% से 3.2 और व्हाटएवर जो आपने बताया फिगर। तो बेशक अगर ग्लोबल ग्रोथ रेट में गिरावट आते हैं तो इंडिया का जो असर है वो सीधा कहीं ना कहीं इंडिया का ग्रोथ रेट में भी बेशक आएंगे। जिस तरह से हमें भी यहाँ पे लोकली हम लोग का जो जीडीपी ग्रोथ रेट में भी हम देखे डाउन साइजिंग किया जा रहा है लगातार नया नया स्टडीज का या नया नया अनुमान का साथ। लेकिन हमें ये समझना है कि बास्केट ऑफ गुड्स में क्या क्या फर्क आ सकता है। एक तो यह है कि हम लोग का एक्सपोर्ट्स जो है ट्रेडिशनली अगर एक्सपोर्ट्स में कहीं ना कहीं गिरावट आता है तो वो एक रिस्क फैक्टर है। जिस तरह से ग्लोबल ग्रोथ का वैसे एक्सपोर्ट स्लो डाउन है। द गुड थिंग इज वी आर नॉट ए एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी जी, तो शायद वो एक फायदा है जहां पे अगर देखा जाए कि ओवरऑल जो इमीडिएट अगर 20% के करीब गिरावट 4% से 3% मोटा मोटा 20% होता है। 20% से गिरावट हो तो हमारा शायद सीधे उतना गिरावट ना हो। लेकिन साथ में हमें दो चीज और समझना है। हम लोग का सर्विसेज सेक्टर काफी हद तक इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर निर्भर करके कॉस्टिंग बोलिए बिजनेसेस बोले चला रहे, तो वहां पे गिरावट आता है तो उसमें भी एक असर होगा। हो सकता है। तो सीधी तरह से प्रोपोर्शनेटली अगर उतना गिरावट ना आए, लेकिन इसमें
थोड़ा बहुत धीमीपन तो बेशक हमें घरेलू बाजार का सामने हमें भी करना है, और मैं मानता हूँ इंडियन जीडीपी ग्रोथ में भी वो फर्क बेशक दिखाई देगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें कितना असर डाल सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा हमेशा से ही मजबूत रहा है, अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो ये जो विश्व अर्थव्यवस्थाओं में जो बात कही जा रही है कि धीमी रहेगी, वृद्धि दर धीमी रहेगी, क्या हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इसकी भरपाई कर सकता है? नहीं, भरपाई तो करना खैर मुश्किल है, बिकॉज दे आर नॉट सब्सिट्यूट्स फॉर ईच अदर उस हिसाब से। लेकिन ये जरूर है कि जैसे शुरुआत में हमने कहा कि भाई मानसून का जो वेरी इनिशियल प्रेडिक्शन जो आया हुआ है वो कह रहा है कि मानसून सामान्य रहेगा। तो ऐसे स्थिति में बेशक मैं मानता हूं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के कंसिस्टेंट ग्रोथ रहे तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में जो गिरावट का हम उम्मीद कर रहे हैं शायद उसमें थोड़ा बहुत कमी हो, लेकिन ये जरूर है कि रिप्लेस नहीं कर सकते जो गिरावट है एग्रीकल्चर ग्रोथ का, तो वो हम बेशक रिप्लेस थोड़ा कम जरूर कर सकते। हाँ, बिल्कुल। Let's move on to commodities. Oil prices today rebounded as a drop in U.S. oil inventories and concerns over tighter supplies from Russia and Libya drove a recovery from the previous session's sharp losses. Crude prices rose more than 1% in intraday trade. Brent crude was trading around $108.40 per barrel, while WTI crude prices were at $103.70 per barrel. Jayanto, even though the fuel prices have held steady in India for almost 2 weeks now, but there seems to be no respite as far as the international prices are concerned. At some point or the other, the refineries, the oil companies will have to factor it in, and then this will again have an impact on the inflation. Yeah, it's actually a Tom and Jerry story whereby the run doesn't stop at all. So although in this case, as I said, the cartel of oil manufacturers are a crazy lot by themselves. You just can't predict nor analyze exactly where and how they will shift. If there is a sudden spot in prices, the cartel owners or the cartel producers start producing more oil, which leads to depletion of prices immediately. So it's actually a crazy way in terms of how But the point is, how long will the oil continue at above $100 levels? So that's what's going to be the actual pain to factor in, not only in India's economy but a global economy in that sense. Although we are talking of fossil fuels, we are talking of replaceable energy in the long term, but 98% of all our energy consumption is still the world maritime business. 85 to 90% of the maritime business is oil tankers, which are moving from one part of the continent to the other, shifting oil. So from that perspective, I do believe it's a pain which is going to come in slowly and surely and going to remain for a while, at least for the next 2 to 3 quarters. जी, बात करते हैं गोल्ड की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना आज 265 रुपए सस्ता होकर 52,485 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मई अनुबंध वाली चांदी भी 625 रुपए टूटकर 68,145 रुपए प्रति किलो के स्तर पर रही। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,950.70 प्रति औंस पर था। चांदी भी गिरावट के साथ $25.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। Jayanto, if we move away from the top stories, now tomorrow the British Prime Minister Boris Johnson is coming to India on a 2-day visit, and next week we have the President of the EU coming to India on a visit. So, given in the background of the FTA that we recently, finalized with Australia and the trade deal that we had with UAE, how important are these visits and what kind of a fillip will it give to the Indian economy and exports? Well, I do believe that there will be a twin impact. Not only just trade, but also how the geopolitical scenario is panning up, because I think global leaders are doing a lot of behind the scenes talking to each other in terms of figuring out how to come out or at least create a solution for this Russia-Ukraine imbroglio. What's important to understand is the Boris Johnson visit at this point of time, while it's sort of a back to business sort of a situation for almost all nations, whereby nations have started talking and thinking of a positive way forward rather than discussing only COVID and how to fight COVID. This visit will also have, I think, if not our immediate frontal talk, but behind the scene talk in terms of political situations and how they're developing. And we are in the process of discussing free trade agreements with both those nations. Yeah. Thank you so much for joining us on this program. And before we close,
Reminder of the headlines. Domestic stocks climb more than 1% amid positive global cues. Sensex rises above 57,000 mark. Nifty settles above 17,100 level. Rupee appreciates 30 paisa against the US dollar, and Brent crude prices hover around $108.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, this is Anubha and Vishal saying Namaskar. Namaskar. Market Mantra.